No combating. You called me names. You've twisted my statements. You've gone out to give untruth about me. So you should have the thick skin to hear this at least from a woman. From a woman. Registration? PM CARES Fund is registered. PM National Relief Fund not registered. Transparency hai? Transparency? Like charity, transparency should start from home. Get your house to order. पर क्यों है जी इतना चिल्लाना? इसीलिए कि only one dynasty led party finds a place, nobody else. अभी चिल्लाना नहीं होगा. जब तक आपसे जवाब नहीं मिलता, हमारे ऊपर एक भी प्रश्न पूछने का अधिकार आपको नहीं है. Transparency is a virtue, and I'm glad you're asking for it. And if PM in 1948 thought it fit to appoint the president of the Congress party as one of the members, which is an unregistered, I guess, a trust. Till today, you didn't bother to ask it to be registered. I don't understand why. You should have actually asked, "Hey, we are running this trust. Why don't you have it registered? Register it." No, not one voice in that party. It took 23 MPs to write a letter now, after 50 years. But now you didn't ask for registration. Then, that is one point on which I wish to say to the opposition benches, transparency, like charity, transparency should start from home. Get your house to order. Registration? PM CARES Fund is registered. PM National Relief Fund not registered. Transparency hai? Transparency? Second, I'm coming. Each one. You're always impatient, Professor. You're always impatient, Professor. You're always impatient. Listen to the answer. Next. No combating. You called me names. You've twisted my statements. You've gone out to give untruth about me. So you should have the thick skin to hear this at least from a woman. From a woman. Sir, objectives, if I have to read it, both are similar. I want to give the advantage to PM National Relief Fund as much I will give an advantage to PM CARES Fund. Objective is to deal with any kind of emergency or distress situation like the one posed by COVID, PM CARES Fund. Funds, PM National Relief Fund. Funds is to be utilized for various schemes announced by the PM. Funds are also utilized for medical assistance, floods, droughts, terrorist violence, etc. In spite of that, there was a question which Honorable MOS asked you. Floods in 5-6 states of the country. But no, don't give it away because Jawaharlal Nehru Museum might get less money. Is that true or not? Deny if it's not true, but deny. Don't remain quiet. That's not leader of the opposition. Particularly, that's not leader of the opposition of a whole party. That's not, particularly if you're asking for transparency. Answer his questions. Answer his questions or else you cannot have the right to ask questions of us. आप जवाब दो, नहीं तो मुझे प्रश्न ही सुनना नहीं चाहिए आपसे. अगर जवाब नहीं मिलता, प्रश्न पूछने का अधिकार आपको नहीं है. ऑडिट, दोनों का ऑडिट आज SARC and Associates कर रहे हैं, दोनों का. So where is your worry about the transparency bit? But you should be worried because after the audit, जैसे MOS ने बताया, वेबसाइट में ऑडिटेड अकाउंट्स डाला रखा है, मगर PM नेशनल रिलीफ फंड में पिछले कितने सालों से मीटिंग तक ही नहीं हुआ ना. सिंस 1985 एक सिटिंग मीटिंग तक नहीं हुआ. जरा पब्लिक फंड है, इसीलिए उनसे भी पूछा करो ना. Please hold the meeting. Please put up the audited accounts. Put it in the website. Distribute copies to all the MPs. वो भी करिए ना. In the name of transparency. Next, applicability of RTI. RTI के ऊपर इतना लगाव है
इसमें हिंदी राइट, लगाव राइट, नॉट एप्लीकेबल, पीएम केयर्स का नॉट एप्लीकेबल एज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी सब्सटैंशियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, है ना? व्हाट इज इट फॉर पीएम नेशनल रिलीफ फंड? नॉट एप्लीकेबल एज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी सब्सटैंशियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। इन दोनों में स्टेटस ऑन आरटीआई सिमिलर है, मगर आपका गुस्सा आरटीआई के ऊपर, हमारे ऊपर ही लगता है, आपके ऊपर नहीं, क्योंकि उधर डर है। आरटीआई उधर प्रश्न पूछने में आपको डर लगता है, क्योंकि 23 सिग्नेटरी के साथ लेटर का ही फेट आपको मालूम है। आरटीआई डालो, क्या होगा पता नहीं, इसीलिए यू वेरी स्कैर्ड। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। देन एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों का by on an honorary basis, joint secretary administration of the PMO used to do it. दोनों को एक ही है। But where is the big difference? It is in the management. The management of the Prime Minister's PM Cares Fund is Prime Minister is the ex officio, and like the way MO is said, every other trustee is there by virtue of the post that they're holding. Home Minister, Defense Minister, Finance Minister, and nominated ex officio trustees who are eminent persons from field of science and law and whatever. And they together sit and take a milepost shift karne wale kaam. Chodo ji, chodo. Management and decision making goes on record with regularly held meeting and recorded minutes. Whereas what is the management of PM National Relief Fund? Managing committee consists of Prime Minister, President of the Indian National Congress, only party. And that only party's president will be there. Transparency is achieved. इस देश में कितने पार्टियां हैं भाई साहब? माननीय स्पीकर जी, हजारों के संख्या में पॉलिटिकल पार्टीज इस देश में है। सबको लगाओ। सिर्फ कांग्रेस पार्टी का क्या अहमियत है कि उनको ही जीवन भर, डायनास्टी भर उधर रहेंगे? ये ट्रांसपेरेंसी का नमूना है क्या? फाइनली टैक्स डिडक्शन के ऊपर भी, हाउ डिड इनकम टैक्स कंसेशन गेट गिवन? बोथ ऑफ देम हैव टैक्स डिडक्शन। एटीजी लागू दोनों का है। डोनेशंस आर एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G फॉर पीएम केयर्स। Donations are eligible for 100% deduction under section 80G for the PM National Relief Fund. वो क्यों दर्द नहीं देता? सिर्फ ये वाला दर्द देता है। क्यों? वो क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? हमें भी है 80G, बोलो, जवाब दो इनका प्रश्न के लिए ना। क्योंकि जनता का मेमोरी कम है, वो याद नहीं रखेंगे। इसको याद रखेंगे गरम 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 नहीं, हम सुनकर बैठने वाले लोग नहीं है। पूछेंगे आपसे। लास्टली, जिसके ऊपर सबको पेट में दर्द होता है, राइट? CSR। हाँ, जहां भी योर पेट माइट बी इन योर दर्द सर, सो इट विल बर्न द गुड वन। सो नॉर्मली पेट में दर्द बोलते हैं। अगर आपके पेट आपके सर्द में है तो आई डोंट नो। CSR, donations by companies classified as CSR for the purposes of Companies Act 2013 applicable to PM Cares Fund, as much as donations by companies classified as CSR for the purposes of Companies Act 2013 applicable to PM National Relief Fund. पर क्यों है जी इतना चिल्लाना? इसीलिए कि only one dynasty led party finds a place, nobody else. उसको कैसे खबर अप करें? दूसरे के ऊपर आरोप डालो, दूसरे के ऊपर चिल्लाते रहो। अभी चिल्लाना नहीं होगा। जब तक आपसे जवाब नहीं मिलता, हमारे ऊपर एक भी प्रश्न पूछने का अधिकार आपको नहीं है। धन्यवाद जी।